Good afternoon, everyone. I hope my voice is audible. All right. We will begin in next 5 minutes. Let everyone join in. Hi, Mohammad. Thank you, Narendra ji. Good afternoon, Manjunath. Good afternoon, Raja. Thank you so much, Raja, for confirming for the video. And I'm sure you're able to see the screen as well. All right. So meanwhile, others are joining in, the ones who've already joined. If you can please share how was your day, how was your trading experience today? Market ने एक gap down करा था, so कैसा रहा दिन? Manjunath is saying volatile. Volatile तो काफी था. It was indeed a good volatile day, but it was one side. I mean, if we talk about Nifty in particular, there was not much of a volatility there. The entire day we were just trading in the first 30 minutes का candle only, and उसके बाहर का range ही आज नहीं बन पाया है. So what are you expecting? What is the expectancy overall? I'll just like to understand from you guys. Next week, what would be? Are you bullish for the next week or you're still bearish? What's your view? Dave is saying sideways. Okay. Uma saying loss in positional calendar. Raja's also saying it was bad as I had bull put spread. It went into loss and you're still holding. Okay. Anup is bullish. Okay. Bearish to neutral is what Uma is saying. Okay. What about other attendees? We have a lot of people joining in. So what about the other attendees? What's your take on okay, okay. All right, so we hit the 4 o'clock mark and it's time for us to start with the session now. And
Today is going to be a very interesting session. We are going to talk about Fibonacci and Pascal's triangle. Most importantly, what is going to be interesting today in today's session is that we're going to talk about some mathematical concepts, something we've studied in school, something we have applied in very basic maths kind of scenario. So yes, we'll be learning about that. We'll be going back to school days kind of, because there's a very famous saying which goes that all TA that you need to know, or all the maths that you need to know to learn TA was taught to you in 4th class. अगर आप आपको 5वीं क्लास से भी तेज नहीं होना है, as there was an old show of Shah Rukh Khan which I remember, कि आप 5वीं क्लास से तेज है kind of. So for technical analysis and to be a trader, you don't even need to know that much. You need to know whatever was taught into your 4th standard. आपको सिर्फ addition, subtraction, multiplication, division ये चीजें भी आ रही है. You can be a good trader, and there are going to be some concepts like Fibonacci and Pascal triangle which we will go into. Pascal's triangle की जब हम बात करेंगे तो we will see that there are a lot of things that it talks about, but we'll be focusing on just something that's related to our trading experience and all. And before I get into all of that, just a little about me. This is Dhwani Patel, and I am the founder of MarketFeds and Finversify. I am a SEBI Registered Research Analyst. I also feature on channels like ET Now Swadesh, Economic Times, CNBC. So this is for all the new joinees who were not there in our last session. Now moving ahead with the topic of the day. Can we have a quick round of answers in the chat box where I can know that how many of you know about Fibonacci and Pascal's triangle, or have heard about Fibonacci and Pascal's triangle? कहीं से सुना हो, channel पे सुना हो, कहीं से भी कुछ जो आपका व्यू पॉइंट है इसके बारे में, what you have read या फिर आपने अप्लाई करा है तो बहुत ही अच्छी बात है. If you have applied it, आपको उसके बारे में पता हो, quickly please put it down into the chat box if you know about it, and if you know about it, what do you know about it? All right, there are good number of answers coming in. Let it flow, guys. Once we have a good amount of answers, we will go through. Mostly what I'm reading over here is that a lot of you have heard about Fibonacci, but Pascal's triangle new है काफी लोगों के लिए यहाँ पे, but बहुत ही interesting concept है ये भी, तो हम उसके बारे में definitely करेंगे. All right, so what I'm reading over here is Fibonacci. Uma is aware of Fibonacci. We have Anoop. Hi Anoop. Anoop was also knowing about Fibonacci, and it's nothing about Pascal's triangle. Okay. I know Rohan is saying he doesn't know. Okay, Rohan, you're in for something really nice and very basic to understand. कोई भी rocket science नहीं है. This is a very basic level application that we are going to learn. And Uma's again saying no about Pascal. Fibonacci is a pattern and its range. Although to a certain extent, I would say that we will rectify the words used. Fibonacci is not a pattern. It's a way in which you get to know the levels. So yes, we will be going through with that. Then only Fibonacci but did not use. Narendra ji has not used. Okay. Sum of two previous numbers. Yes, very well said, Vinay. It's sum of two previous numbers, and Sunil ji is telling me about the levels, 66%.
All right. Oh, great number of answers. Nikhil has a question. Never understand which time frame will be good. Okay, this is a question which all traders struggle with, right? हम सबको यही होता है जब start करते हैं यार, even after years of experience. Like if I say I have like almost 13 years of experience, and sometimes I also have this question, यार इसको मतलब 30 minutes पे देखूं या dailies पे देखूं, which will be the good one? But then it's a pattern that you form, or it's a rule that you form based on which you will be able to going ahead understand what is good, what is not. So that we will of course talk about. You can put about that in the questions we will take next. All right. Raja saying, I've seen flowers have numbers of leaves and yes, absolutely. So Fibonacci is something जो सब जगह पे है. Now, before getting into Fibonacci, we will talk about Pascal's triangle, because अगर मुझे mathematical terms में बात करनी है, तो Fibonacci is baby of Pascal's triangle. Pascal's triangle is something which is first from which we derive the Fibonacci series. So that's why we will go into understanding what is Pascal's triangle and how Fibonacci was derived out of it. So I do read in certain answers that yes, you know what is Pascal's triangle. It is a mathematical pattern that is named after a French mathematician, and it's also known as the Chinese mathematician in the early 11th century. The triangle is formed by stating with a 1 at top and then adding adjacent numbers. So if आपको 11 का टेबल आता है तो आपको ये Pascal's triangle भी समझ में आएगा. Very simple. It starts with 1, then 11. 11 का square क्या होता है? 121, which is also 11. If you add this 2, you get the set number 2 over here. Now 11 square multiplied by 11, it is 1331. So it's entirely a table of 11, that multiplication of 11 that you're going on following for n number of series. And apart from that, what you get over here is addition. आप जब add करते हो तो you get that number. Now looking at that at this Pascal's triangle, आपको trading के बारे में क्या समझ में आता है? Are you seeing some trading related numbers over here? Anything, any observations out of it? Take a look, very well look into the triangle, and you will find some numbers which are very significant as far as trading is concerned. Arun is saying it looks Greek and Latin. मैंने भी पहली बार में मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये क्या है भाई, क्या लगा दिया है मेरे सामने. But then you do realize that there is some hidden, very basic trading related concept into it. Okay, Amrutraj Kamath. What I would suggest is आपने numbers mention करे, but what do these numbers signify? इसको आप थोड़ा सा elaborate कर सकते हो. They were saying no idea. Okay. Mohammed is saying delta related. इसको थोड़ा सा elaborate करके आप डाल सकते हो तो that would be really good. Uday is saying mean value. No, something very basic. So I will move ahead. Now there is a number highlighted. What is this number? Very basic thing this is. These are the number of trading days in a year. एक year में हमारे पास कितने trading days होते हैं? That is 252 trading days, very clearly. Right? So in a year, how many trading days do we have now? 252. Now, is there, अब मैंने आपको एक idea दे दिया है, right? So based on this, can you tell me that are there any other similar or familiar numbers that you come to see?
Yes, definitely Bhadresh and Nikhil, you're right, 265, 264, but जब हम mathematical terms में इसको calculate करते हैं, on an average 252 days होता है. हमने एक previous session करा था, where we were talking about volatility and VIX and calculation of VIX. So as far as most of the mathematical papers are concerned, everywhere the number of trading days have been taken up as 252 on an average. ज्यादातर mostly 252 trading days आपको मिल जाते हैं. Yes, Manjunath, very right. 20 trading days in a month, right? So these are certain couple of things which you can derive from trading perspective in Pascals, which is 252, which is the number of trading days. 70 आपको एक quarter का अंदाज आ जाता है when you are taking 70 days into consideration. Then you have 20, which is a month. And then you have 6, which is close to 5. कि आपका 5 days का एक वीक बनता है. यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल में हमें 6 मिलता है. इसका एक और लॉजिक है which I have applied and seen कि इसके अंदर आप प्रीवियस जो आपका वीक होता है उसकी एक्सपायरी की वोलेटिलिटी को अगर आपको कंसिडर करना है तो आप 6 का जब आप ले रहे हो यहाँ पे एवरेज या कुछ भी तो आपको उसके अंदर आपको प्रीवियस वीक की एक्सपायरी वोलेटिलिटी भी आप कंसिडर कर लेते हो. And that is the reason why 6 is also a good number if you want to judge a week's performance there. All right. Now, Pascal से Fibonacci कैसे आया? So it's very simple. When you add up the numbers diagonally upwards or diagonally downwards, what you get is a Fibonacci series. ठीक है. फिबोनाची सीरीज कैसे बनता है उसको हम लोग अभी डिटेल में आगे देखेंगे. सो दैट इज वेयर पास्कल्स में से ही फिबोनाची डिराइव हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल एज वेल व्हिच maybe in going ahead in the other sessions we'll take where pattern recognition like your triangles can be done with the help of Pascal. Pascals के basis पे Pythagoras theorem हमने पढ़ा था स्कूल में if you remember, a square plus b square. So the same is derived from the Pascals and is also base of the triangle patterns that we spot in the charts. So that is also one thing which we can very well take care of through Pascals. Trading में position sizing का एक concept होता है. Position sizing is also something that can be done with the help of the Pascal's triangle, especially when it comes to option trading. So these are certain food for thought which I'm leaving you with. We will go detailed maybe in the next few sessions about how we can utilize this for position sizing, especially in options and all. But today we are going to focus about Pascals and we are going to talk about Fibonacci a lot, especially the application of Fibonacci, where we will see extension, retracement kya hota hai and all of that. So now I hope till here everyone is clear what Pascals was about and how we came to Fibonacci from it. Can we have a thumbs up in the chat box, please? All right, all right. I'm looking up for more responses. I'll move ahead then with the next concept where we'll see about Fibonacci. Great, great. All right, guys. So now coming next to the Fibonacci series. Now this is something very interesting, a lot generally applied in trading. Heard about, आप channels देख लीजिए, आप ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुना होगा that we are talking about a Fibonacci reversal level or we are talking about a Fibonacci extension level, the golden ratio and all of that. So that all is something, कोई भी rocket science नहीं है, बहुत ही simple है. It's a series of numbers. एक series है numbers का, 0 से शुरू होती है, 0 1 1 2 3 5 वैसे करके add करके जाते हैं, one number preceding the other. You add them up, you get the next number. And
That's how the Fibonacci sequence is something that is derived. Sequence अलग है, ratio अलग चीज है. Ratio में आप एक नंबर को दूसरे से जब divide करते हो, right? So 1 divided by 2 you get 50, 2 divided by 3, right? So on and so forth. The numbers when you divide by the previous number, what you get is a ratio. And when we are talking about a sequence, sequence आपका 0, 1, 2, 3, 5, 8 से शुरू होता है. A lot of applications are done for Fibonacci where out of sequence, पहले sequence की ही application देख लेते हैं. तो sequence की application में when you are using indicators of TA, you are using maybe a MACD, you are using your RSI, you are using moving averages, very simple as a moving average also. You can take combination of these Fibonacci numbers, Fibonacci sequence numbers, and you can take a short term and a long term moving average. Jesse I like the combination of 5 and 13, or you can take the combination of 5 and 21 as well. 5 will be your number of trading days in a week, and 21 will be the number of trading days in a month for you, and you will be able to have the crossovers of that, and based on which you can have simple entry and exit rules also about it. Apart from this, you can use an indicators. अब जैसे RSI 14 तो हर कोई यूज कर रहा है, करेक्ट? बट अगर आप RSI 21 का यूज कर रहे हो, या फिर MACD जो आप यूज करते हैं, आप MACD का डिफॉल्ट वैल्यूज की जगह पे 21 का यूज कर लीजिए, राइट? You will see that variation. Now again, when you're going for a higher number, आप जैसे सीक्वेंस में higher numbers पे जाते हो, वैसे ही आपका डेटा भी जो रहेगा, आप उसका जो एप्लीकेशन देखोगे वो ज्यादा स्मूथ होता हुआ जाएगा. What we'll do is I'll take up a chart. We will apply it first in terms of maybe a moving average, and then next what we can see is we can apply it on any indicator and see about it. Right? Indicator ka choice I'll leave to the janta. You guys can just tell me which indicator you want to see or you want to talk about and all. We will take a look into that one and we will go ahead. जहां तक moving averages का सवाल है, तो I will take up over here. Meanwhile, आप indicator के लिए chat box में डाल सकते हो that which indicator would you want to see with the application of this Fibonacci numbers. Right? What we've done is एक तो 5 का हमारे पास आ गया है, यहाँ पे हमने settings में जाके दूसरे को यहाँ पे कर दिया है हमारा 21. Right. Just have to change the color. अब ये वाला ना थोड़ा सा एक स्मूथनिंग जो है इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि वो एवरेज का एवरेज स्मूथ कर रहा है. ठीक है. So we have taken 2 lines. Are the 2 lines visible? या फिर येलो को चेंज करें? चेंज कर देते हैं. I think yellow is orange ले लेते हैं. Okay. So this is how you can have दो numbers यहाँ पे crossover हो रहा है. No, we've not taken Fibonacci over here. We've taken very simple candles है ये यहाँ पे अरुण. हमने Fibonacci यूज नहीं करा है. Fibonacci is a noiseless charting method. हम लोग अभी उसको यूज नहीं कर रहे. We are taking it purely on candlesticks only. ठीक है. तो ज्यादातर सबसे पहले आज निफ्टी को ही देख लेते हैं कि निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डिराइव ओवर हियर आउट ऑफ दिस, राइट, कि आपका जो ब्लू लाइन है विच इज योर 5 पीरियड का यहाँ पे एवरेज, दैट इज ऑन टॉप योर ये पॉजिटिव चल रहे थे, बट अभी क्या हुआ है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेंसी में, the blue line is down, means आपका current expectancy is lower than the past 20 days का expectancy. अगर हम monthly terms में बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि करंट आपका जो एक्सपेक्टेंसी है इट्स लोअर देन दी past 20 days. वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे एक रिवर्सल मिला था, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला एंड यू कुड हैव गॉन शॉर्ट विथ एवरी फॉल ऑन द इंडेक्स ओवर देयर. Now with all of this, how do I get confirmation? Levels का पता कैसे चलेगा, right? तो इसके साथ हम लोग फिबोनाची को अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म पे ही बात करें तो ये क्रॉस ओवर हुआ, फिर वापस यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, करेक्ट? अब इस नेगेटिव क्रॉस ओवर को यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है, नेगेटिव साइड पे चल रहा है, यहाँ पे ट्रेड करना है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल सिंपली मेक अ फिबोनाची ओवर हियर. मेरे को पता चल जाएगा कि क्या करना है इसके आगे. वील सी दैट थिंग इन डिटेल. सबसे पहले यहाँ पे रेशियोज पे चलते हैं. सो फिबोनाची अगेन काफी लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, वेयर वी आर सीइंग दैट इट्स देयर एज अ पार्ट ऑफ नेचर. यू कैन सी इट ऑन द मैप ऑफ इंडिया, विच इज जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, राइट? ऑल द ज्योतिर्लिंग्स आर इन द शेप ऑफ शंख ओवर हियर. एंड अगेन दैट इज सिमिलर टू आपका फिबोनाची का जो स्पाइरल बनता है, ठीक है? योर गैलेक्सी इज ऑल्सो सिमिलर. I did have an answer where we were seeing that it's similar to a plant, right? Raja was saying. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो. You have 1, then 2, then that goes into the parts of 3. फिर 3 से यहाँ पे 5, 8, 13, 21 वैसे करके. So if you observe, you will see that as a part of the trees also around you. तो आज शाम की एक्टिविटी फिक्स हो गई. जब भी वॉक पे जाएंगे तो एक ट्री पकड़ के उसको ऑब्जर्व डेफिनेटली करना है कि ये फिबोनाची के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, राइट? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इट इज एवरीवेयर अराउंड यू. Even the trunk of an elephant, when it wants to have its food, it's rolled in that same thing. And years back, right, you will find it in architecture also. Years back, when Taj Mahal was constructed or any other monuments that you're talking about, या तो फिबोनाची स्पाइरल या फिर आपका जो फिबोनाची बॉक्स होता है उसके बेसिस पे उनकी कंस्ट्रक्शंस की गई है. सो इफ इट्स एवरीवेयर अराउंड इन नेचर, व्हाई नॉट इन ट्रेडिंग, राइट? दिस इज वेयर इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि भाई ये चीज इतनी जगह पे इट्स बीन एक्सेप्टेड, व्हाई नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. नाउ देयर आर वेरी सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ Fibonacci, where first application is in terms of retracements. Fibonacci retracements के terms में इसको use करा जाता है. Now there are potential levels of supports and resistances. Retracement, first of all, अगर concept किसी को नहीं पता है तो I will elaborate a little on that. Then we get into Fibonacci retracement. When we are talking about retracement, आपका एक primary trend होता है, which is your uptrend में bullish बोल सकते हैं, right? उस प्राइमरी ट्रेंड के काउंटर में जो भी मूव आती है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड योर रिट्रेसमेंट. रिट्रेस हो रही है चीजें. आप आर्मी को भी क्या बोल रहे हो? आर्मी हैड इन्वेडेड बट रिट्रेस्ड बैक, है ना? सो इन्वेशन या फिर ट्रेंड के ऑपोजिट का जो मूव होता है उसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं. सो इट इज द काउंटर मूव टू योर प्राइमरी ट्रेंड, राइट? सो again, what we can say is Fibonacci can be used in a way for your swing trading as well, where you want to take a trade against the primary trend. Primary trend के against में जब trade लेना हो तो भी ये चीज काम आ सकती है आपके, ठीक है? So retracement, I hope सबको समझ में आ गया है. Give me a thumbs up quickly. All right, we've already crossed the century in terms of the attendees. So let's have more thumbs up flowing in. All right, रिट्रेसमेंट समझ में आ गया तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझना बहुत इजी हो जाएगा. और ज्यादातर आपका काम ट्रेडिंग में बहुत इजी कर दिया है, तो आपको ज्यादा उसमें लेवल स्पेसिफाई करना और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिट्रेसमेंट अगर आपको समझ में आ गया, विच इज अ काउंटर मूव. आपका एक प्राइमरी ट्रेंड है, उसका काउंटर मूव अगर आपको देख रहे हो तो आप उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे. अब उस रिट्रेसमेंट के लेवल्स जब हमें फाइंड आउट करने हो तब उन लेवल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है?
Now, first of all, I will discuss with you a few techniques in which you can come to know that prices retrace कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, right? Based on just candlestick charts. हम लोग कोई भी indicators यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं. हम सिर्फ based on candlestick charts पता करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा reversal आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो हम इसमें retracements कैसे use करेंगे. Yes, Vijay, definitely I will be drawing and showing it to you. बिना draw करे तो इसका sense ही नहीं बनेगा. So we will be getting into that thing now. Coming down over here. Stock specific भी आप अपने नाम यहाँ पे डाल सकते हो. Where you want to check, we will be taking up those stocks as well. मैं अपनी तरफ से कुछ stocks पहले discuss करूंगी. उसके बाद आपने जो stocks mention करे हैं उसको भी हम discuss करेंगे. और उसमें भी trend का halt आया है, reversal आ रहा है, क्या हो रहा है, we will put across all of those queries as well. Okay. Now मेरी तरफ से सबसे पहले जो अगर concept समझने में हमें एक बहुत ही आसानी होनी चाहिए यहाँ पे, तो जो पहला स्टॉक विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज फार्मा में से हमने देखा है फार्मा में ऑलरेडी एक वी हैव सीन अ फॉल एंड वी हैव बीन सीइंग कि भाई व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर एंड ऑल. सिप्ला इज वन विच आई हैव पिक्ड अप एंड हियर व्हाट इंटरेस्टेड मी ओवर इज के वीकलीज पे, यहाँ पे ये लाइन देख, वीकलीज पे नंबर ऑफ टाइम्स ये जो एरिया बन रहा था वहां पे हमें एक मिला था, सपोर्ट मिला था पहले. I'll just make a horizontal line over there. Right? This is one level in Cipla जहाँ पे multiple number of times it has acted as a support past में 2021. Right? Now, after that, currently where we are trading near the same levels. Now, this was what I saw on weekly. Going down on dailies. डेलीज पे मुझे क्या दिखा, सेम लाइन, वही सेम लाइन यहाँ पे कैरी होके आ रही है. सेम लाइन पे एक यहाँ पे लो बना है, यहाँ पे करा, आज का भी लो वहीं पे था, उससे नीचे नहीं गए. दो मार्केट्स वर चॉपी, वी डिडंट सी अ लो बिलो दैट लो. नाउ अगेन व्हाट आई डू इज आई गो डाउन टू 30 मिनट्स. 30 मिनट्स पे क्या दिखा, एक, दो, ये यहाँ पे तीन, और एवरी टाइम द लो इज हायर देन द प्रीवियस लो. बहुत मार्जिनल अमाउंट से है बट इट इज देयर. What does it tell me? एक रिवर्सल आएगा, ठीक है. अब वो रिवर्सल कितने पॉइंट्स का यहाँ पे आ सकता है is what I want to know, right? What I will do is उसका जो current existing trend है, I want to take an entry on 30 minutes. मुझे ज्यादा लॉन्ग साइड के ट्रेड्स इस मार्केट में एडवाइजेबल नहीं है, वो चीज पता ही है. तो मुझे 30 मिनट्स पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है. So two things I have told you over here. One is multi-time frame analysis, how we are going from weekly to a 30-minute chart and finding out levels. Now my trading span, if it's 30 minutes, तो मेरा trade short term का रहेगा यहाँ पे. 30 minutes पे if I take down the data, this is where यहाँ पे consolidation बनने के बाद, this is where the exact downtrend started from, right? Now from that level, I will take the top. उसका जो top है यहाँ पे, वो top लेना है. और आपके ये जो बॉटम्स बने हैं उसमें से लोएस्ट लो, सो मेरा लोएस्ट लो कहाँ पे है, ये वाला है पॉइंट, राइट? सो कनेक्टिंग फ्रॉम द टॉप टू द लोएस्ट लो, you make a Fibonacci retracement. Means by what level will the prices retrace back? Now over here, what is it showing? 23.6%. This is already pre-fed into your trading view. You don't have to put in these numbers. In case you want to note it down, you can note it down on the left hand side of the chart. It is there. First level is 23.6%, right? Which is coming at 899. Second कौन सा आ रहा है? 38.2%, which is coming at 918 rupees. Next is 50%, 933 rupees. 61.8, 948 rupees. 49 से 50 का पकड़ लीजिए रेंज, right? So now how do I take my trade? मेरे को confirmations मिल गई. I can get into the trade now. My first stop loss is going to be what? If I'm getting it at over here, my stop loss is going to be 869. उसके नीचे prices move की means the low is broken, the trend is continuing on the downside, right? Till the time that low is not broken, my targets will be in the trailing level of
फिबोनाची, आपके फिबोनाची के जो लेवल्स आपको एक के बाद एक ऊपर मिल रहे हैं, उनके ट्रेलिंग लेवल्स में आपको इसके स्टॉप लॉसेस करने हैं और टारगेट्स उसके बाद उसके बढ़ाते जाना है। आपने करंट लेवल पे एंट्री कर ली, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ से 899 का रहेगा। वंस 899 इज टेकन आउट, आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपका जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट पे लेके आना है एंड योर नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 918। Once you breach 918, same process. You trail your stop loss, you trail your target. All right. If in between you see at any point in time कि यहाँ से reversal आ रहा है, you are discretion, you can exit your trade, या फिर लग रहा है भाई बहुत profit हो गया, मुझे अब इसके ज्यादा नहीं hold करना है, you can exit your positions. It's totally discretionary. यहाँ पे हमने सिर्फ एंट्री के रूल्स बनाए हैं, हमने एग्जिट के रूल्स नहीं बनाए हैं, हमने स्टॉप लॉस का रूल डेफिनेटली बनाया है। ठीक है, सो वी हैव अवर लॉस रूल इन प्लेस विच इज माय रिस्क मैनेजमेंट, आई हैव माय एंट्री रूल इन प्लेस, राइट, सो आई कैन पिक अप माय ट्रेड्स। आपका एग्जिट रूल जो है प्रॉफिट का, which is your trailing, or it is as per your discretion, you've made enough, you can move out of the same thing. Now similarly there is one more example in past, ये आपको मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे भी मिल जाएगा क्योंकि इसको मैंने काफी पोस्ट करा था उस टाइम पे, is another in Axis Bank। ठीक है, डेली चार्ट इसका लेके आता है। दिस वाज वन टाइम जब बैंकिंग वगैरह सब कुछ मूव करना शुरू हुआ था, आई हैड अ बाय कॉल ऑन एक्सिस, प्रीवियस स्विंग के ऊपर बंद हो रहा था एंड इट वाज मूविंग अप, इट वाज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, सो वी हैड गॉटन ओवर हियर, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं हिट हुआ था एंड इट हिट माय 61.8%, which was my target of 970 to 970 का high बना के, and from there we reversed. So this is also one of the trades which I personally had. Now coming down to other stocks that we are getting over here, दो ही आए हैं, बाकी कोई stock queries यहाँ पे नहीं आई है ज्यादा। I would request everyone to please put across your stock queries. उसके अलावा हम लोग सबसे पहले चलते हैं निफ्टी पे, where we're talking about Nifty. Nifty recently, if you talk about, ये वाला एक तो हटा देते हैं पहले, why, how to do that, I will tell you. Yeah, सबसे पहले यहाँ पे, what do we see? Trend is what? Downwards. We made a top से हम लोग नीचे की तरफ में आ रहे हैं, right? Now we are seeing this pullback over here. Pullback के लिए मुझे क्या करना है? Current trend से जो हमने पहले ही भी करा, from the current up to the low, we made a retracement. What happened? Prices did not cross above the 61.8% का retracement level, and prices reversed from there, right? So this is with Nifty. दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं, so Nifty पे अगर हम आगे की बात कर रहे हैं, what we are seeing that we are moving in a downward trajectory. आज के दिन का जो session था, there also we saw certain sell-off in the morning. And again, what I was talking about, 30 minutes, if I have to see, the first 30 minutes of the day, we were clearly trading in that range. So now this candle becomes a very important candle for me, that if the high of this candle is taken out, then only there are any longs. But again, at that point in time, this retracement level for me is going to be very important. 17,595, 17,600. If we do not close on the index above 17,600, we can expect a further downward move into the same. So based on retracements, ये काम कर सकते हैं कि आज की जो हाई बनी थी उस रेंज को ब्रेक किया, go on the long side, पर 17,600 के पास we have to book the profits. You don't have to, or you can trail your profits, but that will be a very very important level to decide कि इसके आगे bullish moves continue करेंगे या नहीं करेंगे, right? निफ्टी को लेके ही बद्रेश शाह has to say that okay, sir bullish है निफ्टी पे, मंडे को गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. I'm really hoping that we have a gap up on Monday, but overall data is not suggestive of the same. Again, if we have a gap up as per the levels discussed, I would clearly suggest that 17,600 is a level which you should keep in mind, and if
prices are trading anywhere in that range, please exit your longs, right? Apart from that, the next stocks that we have is HDFC Bank and Tata Motors. Tata Motors पे काफी लोगों का अभी है, right? Keeping in view the IPO talks going on. So yes, Tata Motors again, if we check up on a daily chart over here, क्या दिख रहा है? एक upward का swing तो बना है, but we are there trading over here, right? Apart from that, weeklies पे भी काफी सारा, so I'll just remove this, lot of early analysis जहाँ से definitely we did get some downward move as well, और पहले की जो gaps थी, this is how you should keep your old charts. They tell you that what has happened in that time zone for you, right? So overall if we see over here, इसके अंदर definitely एक हमें price halt या फिर sideways to downward trend इसमें देखने को मिल रहा है. Overall expectancy on this particular one should be on the on the long side, given the news flow coming in picture, but chartically the structures are not suggestive of the same. शॉर्ट टर्म प्ले करा जा सकता है, जहाँ पे आप इस स्विंग लो का एक स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर कर सकते हैं, बट ओवरऑल ज्यादा कंफर्मेशन इसके अंदर जो हमें मिलेगी, तो फॉर दैट द प्राइसेस नीड टू क्रॉस दिस जोन. यहाँ पे जो एक जोन बनाई गई है where the volumes are also low, this zone has to be crossed very decisively, which is your 450 level. Once crossed above 450, you can definitely expect good moves coming in over there. Yes, now coming to the next stock, HDFC Bank. Yeah, ये range में calculate कर, this is regression which I had made now. Yeah, coming up to this one, कोई भी एक प्राइस हॉल्ट भी यहाँ पे विटनेस करने को नहीं मिल रहा है. फर्स्ट वी लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, जैसे कि हम फिबोनाची की बात कर रहे हैं, तो वी लुक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. वीकली चार्ट्स, राइट, वीकली चार्ट्स वी आर सीइंग सर्टेन प्राइस हॉल्ट 17,000 से लेके 1700 से लेके 1720 तक का जो एक रेंज यहाँ पे बन रहा है, वी आर सीइंग सर्टेन प्राइस हॉल्ट्स कमिंग इन देयर, राइट? एवरीवन अग्रीज? Now what we'll have to do is we'll have to see on the lower side, if it breaks below this levels, what would be the retracement. Latest trend कौन सा था? ये वाला, right? All I have to do is यहाँ पे ये है retracement का Fibonacci retracement. Alter F is the function. Click on that. The lowest low over here and the highest high, right? Now what does it suggest? Highest high 703 is the level. इसके ऊपर जाएगा तो your trend will continue further on the bullish side, right? And on the lower side, if we grow anywhere below again 1573, prices are taking a halt at 38.2% retrace. This Fibonacci level breaks below the same, you can go further short into it. Your next target 1533, and after that 1493, 1500 levels, where you will see a certain halt coming in. हमेशा Fibonacci retracement apply करते ना, एक चीज याद रखना, that you will have to consider 61.8% जो होता है golden retracement level. First, you should play for that target only. There would be very less number of chances where you will see even 78.6% and 100% of the gains being taken off. इसका एक बहुत ही important चीज है, that Fibonacci also gives you Elliott wave theory. Elliott wave theory जो है वो भी काफी हद तक Fibonacci पे ही dependent है. In fact, Elliott wave and Fibonacci have a very close relation, where we are going to, in the further sessions, going to talk about that how Elliott wave की जो आपकी waves की length होती है, that is defined based on the Fibonacci numbers, right? And there is one very important line which I will mention over here, is that when prices will be going in the direction of your primary trend, अगर आपकी primary trend के direction में अगर prices move करने वाली है,
तो आपको 61.8% से ज्यादा गेन्स मिलेगी। अगर प्राइजेस आपकी कंटिन्यू करने वाली है ऑन द डाउन साइड, आपको 50% तक का जो गेन्स यहाँ पे होता है वो देखने को मिलेगा। सो दोज आर द थिंग्स ऑफ इलियट वेव। मतलब अभी उसके अंदर डीप जाएंगे तो पूरा इलियट वेव पे ही हमारा सेशन हो जाएगा, बट ज्यादा हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, 50%, 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हीं लेवल्स के बेसिस पे वी विल बी डिसाइडिंग ऑन दिस थिंग। Now, there are a couple of other questions coming in over here. Amul is asked, okay, now let me take it from the top. Tata Motors हमने already discuss कर दिया है. Bank Nifty, yes, Bhadreshi, we will be definitely taking a Bank Nifty as well. Just give me a few minutes. I'll take the other questions related to, the Fibonacci first, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हमें आज के सेशन में सीखनी है बहुत ही अच्छे से. Ranjan Singh is saying from where and how to draw Fibonacci chart again. I hope Ranjan you've got it. We just did right now where आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे. ट्रेडिंग व्यू पे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस है उसमें मिल जाएगा Fibonacci Retracement, Alter F उसका फंक्शन है. When you are drawing a Fibonacci, right, what you need to take care is कि आपको जिस डायरेक्शन में प्राइजेस की रिट्रेसमेंट चाहिए. अब हियर वी वर लुकिंग फॉर अ डाउनवर्ड, राइट, वी वर लुकिंग फॉर कि भाई बॉटम से जो प्राइजेस ऊपर बढ़ी अब नीचे की तरफ कैसे आएगी, तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है. When you're looking for the things downward, you have to take it from down to up. When you're looking for things ulta, you're looking from up to down. आपको ऊपर से नीचे करना है. Okay. Now, Amul is asking, do we consider wick? Yes, absolutely. Now, this is a very tricky question actually. I'll tell you why. Because अगर आप लाइन चार्ट फॉलो कर रहे हो और लाइन चार्ट पे आपने फिबोनाची बनाया है, तो यू विल गेट योर कंफर्मेशंस ऑन क्लोजिंग बेसिस. अगर आप विक को लेके कंसिडर कर रहे हो, कैंडलस्टिक्स को लेके कंसिडर कर रहे हो, तो यू आर टेकिंग द इंट्राडे का वोलेटिलिटी आल्सो इनटू द पिक्चर. तो आपकी टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा. इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो आई विल सजेस्ट कि लाइन चार्ट यूज करो, उसके अंदर अप्लाई करो. If you are not an investor, you are not looking for a long term, you're looking for short term trades, then candlestick is definitely used, and you have to take the low and the high of the candles. Okay. Now again, Amul is asking, do exact entry SL target. As I said, आपको जाना है Fibonacci के levels के अंदर, right? If you have spotted the prices, like currently we are discussing about HDFC Bank, so taking this one only into consideration, हमने यहाँ पे spot कहाँ पे करा है जब prices are between 23.6% से लेके 38.2%. Okay, my entry will be now again when the prices go below 38.2%. Visually मेरे को यहाँ पे दिख रहा है very clearly that 38.2% से हर बार prices वापस ऊपर गई है. VIX are going down, but the prices have gone up back again. तो उस level के पास we are finding certain support. Once that support is taken out, we will enter into it. ठीक है. So intraday basis पे भी अगर आपको उसके नीचे price movement दिख रहा है, तो definitely there has been one wrong trade also over here. And उसके नीचे प्राइस दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रही है, फॉल आपको कंफर्म मिल रही है कि भी बैंक निफ्टी में भी प्राइवेट बैंकिंग में भी दोनों में फॉल आ रही है. यू कैन गो शॉर्ट ऑन दिस थिंग बिलो 1573. Your stop loss will be where? Your stop loss will be 1622 या 1623 पे डाल दो. On a safer side 1625 पे भी डाल सकते हो, right? Now टारगेट कौन सा आएगा? 1573 पे एंट्री करा, नीचे 1533 और उसके बाद 1493 जो आपके फिबोनाची के लेवल्स है. I hope that answers the question. And so Amul, in this scenario, when you're talking about the win percentage of this strategy, again, it's a discretionary strategy. For me, it has worked more than 70% of the times where I have seen 61.8% से ज़्यादा मेरे को इसके अंदर gains कभी भी नहीं मिले हैं. So बेधड़क होके, even if I have to post it on social media, I have to go and put it across, or personally also if I have to trade on this thing, I will see for a reversal. My target is always 61.8%. 50% to 61.8% के अंदर मैं सारे gains book कर लेती हूँ. So it has worked more than 70% of the times for me. Given your risk reward is in favor, you will be able to apply it and you will be able to make the most out of it as well.
ठीक है. Now meanwhile that I'm taking the other questions, what I would do is, there is a small poll which I'm going to post across, and I would suggest you guys to even answer this one. Right. So meanwhile you guys are answering into the poll, what I would see is जो concept को लेके काफी questions है, those I will answer, and जो stock specific questions है that we'll keep on taking ahead as well. ठीक है. So कौशल इज सेइंग मैम प्लीज एक बार फिबोनाची दोबारा ड्रॉ करके बता दीजिए. बिल्कुल, आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग अप, क्योंकि स्टॉक क्वेरीज आती ही जा रही है, तो वी विल बी टेकिंग अप कि भाई इसको कैसे करेंगे आगे. Apart from that, Girish is again asking for the entry. Yes, Girish, we will discuss the entry again. MACD के parameter by default. बद्रेश, MACD के पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जो भी आप डालते हो उसमें 9, 12 और 21 डिफरेंट पैरामीटर नंबर्स आते हैं उसके अंदर, बट सजेस्टिव इज कि आप 21 को डाल के यूज करिए. इट विल बी गिविंग यू बेटर रिजल्ट्स. अगेन फिबोनाची डिराइव्ड है, इसको बैक टेस्ट भी करा है काफी लोगों ने, एंड वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स कमिंग इन देयर. Manjunath is asking, can we try intraday? Yes, of course. This is something you can try. इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, राइट. इसका स्ट्रैटेजी वाइज जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर आप डिस्क्रिशनरी हो, ज्यादातर ट्रेडर्स को हम जो देखते हैं वो डिस्क्रिशनरी ही होते हैं, राइट. एंड बेस्ड ऑन विच अगर आप न्यू एंट्रेंट हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टूल है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई प्राइसेस अगर रिवर्स हो रही तो कितनी लेवल तक ये रिवर्स होने वाली है, राइट. सो इट इज डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेबल. आप ट्रेडेबिलिटी इंट्राडे पे करना चाहते हो, आप 30 मिनट्स के चार्ट पे अप्लाई करके देख लो. आप ट्रेडेबिलिटीज की पोजिशनली करना चाहते हो, आप डेलीज पे अप्लाई करके देख लो. And then there are a lot of things which go also into this. Now quickly I will touch upon those points as well. So we have got the poll results over here. I hope everyone has answered. I'm closing the poll for now. Yes, so we do have that. Almost we see majority of you will be applying this thing. So yes, applicability is good. Now coming down to the questions जो पहले हमारे साथ यहाँ पे थे and have been asking about, एक बार वापस से ड्रॉ करना है इसको. So we will take up any stock over here and we will make recently we are seeing a lot of reversal coming in pharma. We've seen today, this is one stock which was there lot of time, Dixon Technologies. इसको भी हमने देखा कि एक रिवर्सल यहाँ पे मारी है. इनफैक्ट डेलीज पे इफ आई हैव टू से, डेलीज पे भी यहाँ पे वी हैव गॉट सम अपटिक्स कमिंग इन ओवर हियर. 30 मिनट्स पे यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन मिला. प्रीवियस यहाँ पे स्विंग हाइस के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर बढ़ा है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है मुझे, रिट्रेसमेंट्स बनानी है. सिलेक्ट द रिट्रेसमेंट टूल, हाईएस्ट हाई फ्रॉम हियर टू द लोएस्ट लो. आपका ये कैंडल का जो लो है उसके लो को पकड़ के आई विल मेक माई रिट्रेसमेंट्स ओवर हियर. नाउ price has already moved above 23.6%. It has already moved above 38.2%. So it's a good time to enter. ये जो यहाँ पे इसका जोन था वो ब्रेक करके उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है. So even in Monday session you can go long on it. What will be your target? Your target will be first over here 50%, 2922, next 2953, right? 2922 over here again will become a very crucial level. Why? यहाँ पे you see this? This is nothing but basic economics ka rule where we are applying demand and supply, where we are seeing that over here what was happening, it was acting as more of a support, right? तो वहां पे एक resistance भी आएगा. There is also a concept called change in polarity. Once a support will become a resistance, once a resistance will become a support. So that can act over here. 2922 का यहाँ पे target लेके चलना है.
स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाएंगे? तो इस दिस केस इफ आई पुट दिस एज अ स्टॉप लॉस विल बिकम वेरी डीप फॉर मी, मतलब 1:1 का यहाँ पे ट्रेड रेशियो आ जाएगा फर्स्ट, right? So you can do that thing. You, if you want to be a conservative kind of, you can take the risk. You can put 2853 as your stop loss entering over here. If not, then you have to use your discretion, where again this candle, which was the biggest candle, after this you see a zone here also. Before this next uptick, you are seeing a certain zone over here. So 2870 would be your ideal stop loss. Uske niche, or definitely the trend will reverse and the price will go down further. So 2870 ke stop loss ke saath you can go on this day. Now apart from that, हमने काफी कुछ यहाँ पे छोड़ दिया retracements के बाद. Extensions are very useful when you have prices trading near all time high, right? All time high, या फिर आपको 52 week high से ऊपर के prices चल रहे हैं. You want to know what will happen over here. So one counter which I would like to discuss, which was also there as one of the very top buzzing counters. तो Gale का counter dailies पे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, राइट, एक अप मूव दिया यहाँ पे. ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो ये एक यहाँ पे इसका जोन बना हुआ है. बट आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इट विल गो, राइट? नाउ आई टेल यू क्लस्टर ऑफ एविडेंसेस आल्सो. दोनों चीज इसके अंदर करेंगे हम. यहाँ पे दिस वाज द लेटेस्ट अप ट्रेंड. सो फ्रॉम हियर हाई, लो से हाई, हाई से वापस यहाँ पे लो, जो काउंटर ट्रेंड हुआ उसका लो उसको पकड़ना है. एंड फ्रॉम दैट you will get this results. इसको वापस से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? You have to go to trading view. In the corner you will see Fibo trend extensions. Lowest low को पकड़ना है, यहाँ पे highest high को पकड़ना है, ठीक है? Again the lowest lows, and you will have your extensions over here. 78.6 से prices ने वापस रिट्रेस करा, अब वापस बढ़ रहा है. अगेन क्लस्टर ऑफ एविडेंसेस की जो मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पे हमने देखा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट, जो आपकी प्राइसेस का हाई गया है 115 यहाँ पे जो 100% हमें प्राइस मूव अभी की जो अप मूव का 100% प्राइस मूव अगर हम काउंट करें तो वो भी 115 पे आ रहा है. So the ideal target for this one has to be 115 to 116 का range, where you will see it getting achieved in the next few trading sessions. So if you've gone long on it, आप 116 तक इसको hold कर सकते हो, ठीक है? So this was Fibonacci extensions, जहाँ पे prices की आगे की हमें range नहीं पता है, so you can make that thing and you can come to know कि what has been the price move and how it will move further as well. उसके अलावा there is time based analysis also which you can use in Fibonacci and you can apply it. These are certain examples जो मैंने already आपको चार्ट पे दिखा ही दिए हैं, which was your index. Cummins के अंदर मैंने ये एक चीज करी थी, so we'll take Cummins also as an example over here. Weekly breakout दिया था इसने over here, weekly चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं, है ना, तो ये वीकली हमारी जो प्रीवियस स्विंग थी इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है. मुझे चाहिए कि अब इसके बाद आगे प्राइसेस कितना बढ़ेगी, राइट? व्हाट आई डू ओवर हियर इज आई विल टेक द प्रीवियस स्विंग, देन कनेक्ट इट टू द लोस एंड आई विल गेट द यहाँ पे एक्सटेंशंस. वापस से करते हैं इसको एक बार. Fibonacci over here, trend based Fibonacci extension. We'll take the low, we'll take the high, and then again the low. What do you see over here? Prices moving up. Target कैसे पता चलेगा? 100% will be the first target. तो यहाँ पे ये weeklies पे हमने बनाया है, right? तो weeklies पे you will have to keep on trailing your position. You want to keep your first target at 61.8 to 1744. After that, if you are targeting at the 100% of the swing price movement, 1862 will be the next target for this one. Okay. I hope everyone is clear with retracement and extensions कैसे draw करते हैं.
ऑल राइट, ग्रेट। बैंक निफ्टी का एक चार्ट है जो हमने छूट गया, काफी लोगों ने यहाँ पे पूछा हुआ है, सो आई टेक द लास्ट वन एज बैंक निफ्टी, and after that we will be taking up no, we'll be not taking any other stock, but we'll be taking up topic related queries only. Vijay is saying he did not understand the extensions well. बिल्कुल विजय, हम लोग वापस से extensions को draw करेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पे वीकलीज पे क्या चल रहा है? वीकलीज पे ओवरऑल वी सी दैट प्राइसेस डिड मूव इसके ऊपर, बट did not sustain. Dailies overall what we are seeing on bank nifty is definitely a downward sloping channel. यहाँ से ये टॉप से लोअर हाई और लोअर लो हम बनाते जा रहे हैं। एक ये पॉइंट है जहाँ पे वी आर सीइंग सर्टेन रिस्पाइट, ये वाला लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। And once this low is taken out, we can expect a further fall coming in on Nifty. But as of now, for me, what will be important is that currently also we have seen downward, and this is level. तो अब इसको Fibonacci में कैसे apply करूँ? Right? The question comes is अब इसको Fibonacci में कैसे apply करूँ? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लेंगे। ये सबसे पहला अपना अप मूव था, जो लेटेस्ट वाला अप मूव है, क्योंकि देखना है प्राइसेस गिर गिर के कितने लेवल तक गिरेगी। ठीक है, लो एंड द हाईएस्ट हाई यहाँ पे आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन विक, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पे विक का भी पूछा। 61.8 दिख रहा है, वहां उसी लेवल से रिवर्सल आई है, बार बार उसी लेवल से रिवर्सल आई है निफ्टी के अंदर। सो 40,000 का जो लेवल हम लोग बोलते हैं 40,060 का लेवल, बहुत बहुत बार दिस लेवल हैज बीन कंसिडर्ड, एंड उसी लेवल से हम लोग बार बार रिवर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा इसके लिए? 40,000। यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ में कहाँ पे फिसलेंगे? 40,000 के लेवल्स पे। अब करंटली इसका लेटेस्ट अप ट्रेंड कौन सा है? ये वाला है ना? तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज अ फिबोनाची क्लस्टर, जहाँ पे दो चीजें एक साथ मिल सकती है। तो यहाँ लो से लेके हाई करा मैंने, ठीक है। अब क्लस्टर में भी अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड जो मैंने बनाया उसका 78% कहाँ पे आ रहा है? 40,000 के लेवल पे। आई होप आई एम एबल टू सी two levels coming in near the same level, same price point या फिर एक zone of prices. This is called where you are having Fibonacci cluster, where you are having different price levels meeting up at the same point. Now these levels are going to be very important. कि इससे जो अगर reverse और नीचे टूटा ना, you will see a further fall coming in, but this one will definitely act as a good support for now. Okay. दिनेश, we will be considering the wick. अगर कैंडल स्टिक ले रहे हैं तो we will be considering the wick. आप एक बात वेरी बेसिक सी है, इसको गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप कैंडल्स यूज कर रहे हो, यू हैव टू टेक द विक्स, द हाई एंड द लो इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि वो वोलेटिलिटी है आपकी प्राइसेस किस रेंज तक बायर और सेलर ऊपर और नीचे धकेल सकते हैं, वो आपको पता चलता है उससे। तो विक्स को तो डेफिनेटली कोई भी टूल अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू कंसिडर दैट। ओके, Bank Nifty also we've taken into consideration, right? Now I would just request everyone that if you liked the session, you learned from it, or you have any suggestions, please put it across into the chat box. We are moving towards the end of the session, and I would definitely like to read your feedbacks. And in case you have any doubts about the session, you can always put across questions. You can mail your questions across. You can, write down your questions. You can send it across to the organizer. You can tag me and send it across to me on social media. Everything is fine, but just do the application well. अगर आपको अपनी application check भी करवानी है, तो आप मुझे definitely reach out कर सकते हो. That's not a problem at all. Anup is asking, please explain trend-based Fibonacci. Definitely, we will, go into trend-based Fibonacci again. Once again, any other stock where we are, going to have a breakout, or we are seeing a breakout.
पावर स्टॉक्स, वी कैन टेक अप पावर स्टॉक्स ओवर हियर. पावर को लेके काफी सारी चीजें यहाँ पे बात हो रही है, तो वी विल चेक एनी ऑफ दोज पावर स्टॉक्स ओवर हियर, राइट. टॉरेंट पावर को यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई व्हाट कुड बी द नेक्स्ट अप मूव ओवर हियर. ठीक है, तो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेंड. उसके बाद ये नीचे की तरफ का मेरे को एक रिट्रेसमेंट मिला. उसके बाद ये फाइनली प्राइमरी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है. तो हियर ट्रेंड एक्सटेंशन, लोएस्ट लो को लेना है यहाँ पे हमें, राइट. एंड देन वी गो टू दी हाई अनु, और उसके बाद वापस से जो आपका लो यहाँ पे बना हुआ है, वी विल बी टेकिंग इनटू दैट. उसके बाद यू विल गेट योर लेवल्स. नाउ अभी 61.8 यहाँ पे आ रहा है, 78 यहाँ तक आ रहा है, and this is my swing. So somewhere in this price range you should be booking your profits. 555 is an ideal target for torrent power in the short term. इसके बाद आप आगे के टारगेट्स इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो. वैसे ही कोई भी एक और आपको डाउन साइड का स्टॉक लेना है, तो मुझे एक ये है which has been showing me certain price halts. Why I will just say weekly chart पे multiple number of times this has been acting as the area of resistance. मुझे अब इसका नीचे की तरफ का ट्रेंड देखना है. डेलीज पे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं. ब्रेकआउट का यहाँ पे टारगेट भी हो चुका है अपना. ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ऊपर ट्रेड करा, बट वापस से नीचे फिसल गया. अब यहाँ पे देख रहे हो तो इन्वर्टेड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टॉप की भी फॉर्मेशन बन रही है, राइट. सो मल्टीपल क्लस्टर ऑफ एविडेंसेस व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर. नाउ ब्रेक डाउन ऑफ दिस थिंग, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट टारगेट. एक्सटेंशन तो नहीं बनेगा, पर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिट्रेसमेंट. सो व्हाट विल हैव टू डू इज, यहाँ से फटाफट वाली देखनी पड़ेगी, तो हम एक रिट्रेसमेंट बनाएंगे. एंड व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ब्रेक ऑफ दिस which will be also break off your 38.2% का level. And after that you can have your targets on the bottom side. Next target यहाँ पे हमारा, या तो आप इसके basis पे ले लो. If you are trading the pattern, take it based on the pattern. If you are taking it based on the Fibonacci, take it based on the Fibonacci. Somewhere the numbers will match with each other, and this is what gives you more confirmation into your trading skills. All right, so what I'm seeing over here is some feedback where Dinesh is saying good learning. Thank you, Dinesh. I'm sure you apply it. That's going to be more of thanks to me. Nandan, thank you. Thank you, Devinder. Thank you, Amrutraj. Thank you, Mayank. હું Gujarati છું, Bhadresh bhai. We will get in touch definitely. No, Amrutraj, there is no indicator of Pascal's triangle like you have for Fibonacci. As yet, nobody has designed it. क्योंकि एप्लीकेशन भी अलग है. जब आप पास्कल्स की एप्लीकेशन की बात करो तो इट इज इन दी फॉर्मेशंस लाइक योर पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल, बट देयर इज नो इंडिकेटर लाइक व्हाट वी सी इन फिबोनाची. ऐसा पास्कल्स के लिए कुछ बनाया नहीं गया है अभी तक. So Mithilesh, I'm sure you can get in touch with the SAS team. They will be able to answer you that very well. All right, thank you so much everyone for the amazing feedback. And we will be having a next session on 16th of March, where I will be talking about swing trading strategy with divergence and RSI. So how you can trade in these volatile markets, क्योंकि past कुछ time से हम देख ही रहे हैं post the COVID and the Russia-Ukraine war and a lot of news coming in. The market has become more of a traders market rather than investors market. So swing trading is something which is very prominent, and in the next session on 16th of March, we will be learning how to do swing trading with the help of divergence and RSI. Thank you so much for today.